Okay, dear students, good evening. How are you? Yesterday I have left the class up to society. We have covered the topic up to society, and today we have to move from this point. So my students, अब now as is our tradition, we are always starting with the 5 MCQ questions. So even today you people have to be prepared for these 5 MCQ questions. Start with the questions. Question number first. What factors contributed to the expansion of the number of caste in ancient India? मतलब कौन से ऐसे कारक हैं जिसने एंशियंट टाइम में कास्ट सिस्टम के एक्सपेंशन में अपना रोल निभाया? पॉइंट 1, द ग्रोथ ऑफ मिक्स्ड कास्ट, द मिश्रित जातियों का विकास. पॉइंट 2, द ग्रोथ ऑफ वेरियस ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, माने डिफरेंट पेशेवर समूह. पॉइंट 3, फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट कास्ट ग्रुप फ्रॉम वेरियस क्राफ्ट कैटेगरीज, और जो डिफरेंट क्राफ्ट कैटेगरीज से डिफरेंट शिल्प समूह है उससे डिफरेंट जाति का बनना. अब यू आर हैविंग द चॉइसेस एंड यू पीपल आर सपोज टू आंसर one of them. Choice A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, and D all 1, 2 and 3. D. Delhi. Yes, correct answer, my students. Correct answer. Question number 2. What were the factors contributing to the decline in the social status of women during later Vedic period? And which of the factors resulted into the decline in the social condition of women? Point in later Vedic period. Point 1, introduction of the fourfold Varna system. Point 2, progress in agriculture. And point 3, prohibition of education of women. मतलब ये 3 कारक दिया गया है और पूछा गया है कि लेटर वैदिक पीरियड में जो विमेन का सोशल कंडीशन डिक्लाइन किया उनमें कौन से कारक उत्तरदायी थे. चॉइस ए 1 and 2 only, चॉइस बी 1 and 3 only, चॉइस सी 2 and 3 only, and चॉइस डी all 1, 2 and 3. इसमें मिक्स है, ए और डी है, मैक्सिमम ए है. If maximum are A, it is a matter of rejoice for me because choice A is the correct answer. If some of you are mistakenly choosing the choice D, that will be you can say a blunder, because this point number 3 is never to be accepted, because I have told you कि in later Vedic period the women's education was not prohibited. It happened very late when the child marriage had to start. In later Vedic period, you will find a number of scholars, the women scholars at that time. In later Vedic period, the women were simply having the 2 different sorts of prohibitions. Firstly, their birth was being discouraged now, in according to Atri Brahmana text. And the second one, women were not allowed to enter into Sabha now during later Vedic period. Apart from that, you will not find any further decline in the condition of social condition of women. मतलब आपको उत्तर वैदिक काल में 2 ही चीजें मिलेगी. एक तो उनके जन्म को हतोत्साहित किया गया ऐत्रेय ब्राह्मण नामक टेक्स्ट में आपको मिलेगा, और दूसरा आपको यह दिखेगा कि जो सभा में उनका प्रवेश को रोका गया, उनकी एंट्री को. अन्यथा आपको एजुकेशन वगैरह तो बहुत बढ़िया था. Question number 3. Assertion A. The number of castes increased in course of time. Reasoning. New occupational groups came into existence. Assertion and reasoning. My students have to choose one of them. E. Choice number A. Yes, correct answer. Question number 4. The Vedic word Kushidin refers to which of the following? That is possibly a new word for you people. Just try to find out one. Choice A, practice of money lending.
choice B, a type of coin, choice C, maritime trade, and choice D, a type of grain. Do the intellectual guess. Do the intellectual guess means कि तुक्का लगाइए, कहीं कुछ लग गया. A. Choice number A. Yes, good. Good. Question number 5. Which of the following foreign travelers has mentioned the prosperity of Madhya Desh? Madhya Desh, yani Madhya Desha, Madhya Desh and Patliputra. And they are the following foreign travelers, Megasthenes, B. Fahian, C. Huensang, and D. Alvaruni. And who have talked about the prosperity of Madhya Desha and Patliputra. Which of the foreign travelers? So please choose one of them. Maximum B. Fahian, yes. Quite commendable and quite exciting for me. Maximum of you have done 5 out of 5 questions correct. क्या अंकुर 5 to 5 correct? Yes. मैक्सिमम आंसर वही आया है. वेरी कमेंडेबल अचीवमेंट है आपका, बहुत बढ़िया आप जा रहे हो. मेंस के क्वेश्चन में भी था, अब कल्चर पर आ गए तो आप मेंस का क्वेश्चन भी डालूंगा. आज से हम रिलीजन की तरफ चल रहे. तो चलिए अब my students, this part I am not going to deal with because this part is the gist of the whole culture. So this one part, overall in ancient period, how the cultural integration was going on and how the exchange of cultural ideas from different regions, how the composite culture is gradually evolving. So you will find such an information, and this is the gist of the all cultural change in the part 2. So here I have not to discuss this aspect. I'll discuss it later. Whenever harmony between the elements of North and South India, well, that is going to cover all part 2 and part 3. So that is the gist of that. So I am just neglecting. I am going to achievements of ancient Indian culture, unity in diversity, unity in diversity. So you people have to go through it. Freedom of expression, express religious views. Express religious views, the argumentative Indians. That is Amar Sen, the book. I am going to start from here. Cultural factor. From here we have to start. सर नरेंद्र पूछ रहे हैं कि how did Yajnavalkya recognize Shudras as cultivators in Gupta age 300 AD to 600 AD? Yeah. How? How did? Now, how did actually up to this period? Because it was from the time of who has asked this question? Narendra. You have asked me the question ki how did Yajnavalkya accepted Shudras as the cultivators during Gupta period. Actually, my students, problem is that it was during Maurya period itself. You will come to know that Mauryas for the first time involved Shudras, slaves and prisoners into cultivation. So Shudras were, even Kautilyan Arthashastra, Shudras were given the right to cultivation. So Shudras were already involved into cultivation, and once they are involved into cultivation, their economic condition improved. And one important point is that Narendra, just try to understand that when the grantees were given the land grants, so at least the 50% or some part of the land was the barren land, uncultivated land. So grantee was supposed to develop the land with the support of tribals. So there was the conversion of tribals within Shudras, because tribals were joining the fourfold Varna system. And once the tribals were joining the fourfold Varna system, so the grantees, particularly you can say Brahmins, so they were given normally the status of Kshatriya to the head of the tribe, that is the tribal Mukhya, and rest of the people from the tribe were just had to be inducted into the Varna divided society in the status of Shudras. So the number of Shudras was fastly swelling up. So it is for this fact that there was much pressure over the Asmritikara Yajnavalkya, and Asmritikara Yajnavalkya preferred to give the Shudra status to Shudras the right to cultivation. And one interesting thing, Narendra and all, I have to inform you
कि as Sudraj were involved into cultivation, so their economic condition improved. And as their economic condition improved, so now it encouraged Brahmins to give Sudraj or to even assimilate Sudraj as their Yajmanaj, because Sudraj were having the proper wealth to donate to Brahmins. So for the first time it was Yagvalk, or it was Yagvalk Smriti, which declared that even Sudraj could perform Panch Mahayagya, simply pronouncing the word Namah in place of Omkara, because Omkara word had to be pronounced simply by Dvijas, twice born, and Sudraj were simply entitled to pronounce Namah in place of Omkara. Now can you imagine that कि Sudraj were given so much concessions? मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगा क्या है। नरेंद्र ने क्वेश्चन किया है, मेरे कुछ इंग्लिश वाले बच्चे बेचैन हो रहे होंगे कि सर जी हमें नहीं बता रहे। देखिए एक्चुअली है कि शूद्र को क्यों स्टेटस दिया गया शूद्राज को, और क्यों याज्ञवल्क्य ने उनको कल्टीवेटर्स का स्टेटस दिया। तो मौर्याज ने तो ऑलरेडी उनको कल्टीवेशन में लगाया हुआ था, तो उनका इकोनॉमिक कंडीशन तो इंप्रूव कर रहा था। और दूसरी बात यह है कि जब आप लैंड ग्रांट जब उस समय दिया जा रहा था तो पूरा का पूरा लैंड तो कल्टीवेटेड नहीं होता था, एक पार्ट अनकल्टीवेटेड होता था। तो अनकल्टीवेटेड लैंड पर वैसे भी ट्राइबल लोगों को मतलब इन्वॉल्व किया जाता था कल्टीवेशन के लिए, और जब ट्राइबल को इन्वॉल्व किया जाता था माय स्टूडेंट, तो उसमें एक दिक्कत ये होती थी कि जो ट्राइबल लोग होते थे तो उनको फोर्सफुल मतलब चतुर्वर्ण व्यवस्था में खींचा जाता था। तो उसमें मुखिया जो उनके होते थे उनको क्षत्रिय का स्टेटस दे देते थे ब्राह्मण्स खुश करने के लिए, और शेष को शूद्रा के स्टेटस में ले आते थे। तो शूद्रा का नंबर तो काफी बढ़ता जा रहा था। तो अब याज्ञवल्क्य को देना पड़ा स्टेटस उनको, मतलब कि भाई वो भी कल्टीवेटर्स हो सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी तो कल्टीवेशन कर रहे थे। अब कल्टीवेशन करने पर उनका इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव किया तो ब्राह्मणों की आंखें चमकने लगी कि भाई अब इनका धन को हम कैसे हम पुरस्कार के रूप में या दान के रूप में ले। तो उनको भी यजमाना बनाने की उनकी कोशिश होने लगी। तो याज्ञवल्क्य ने पहली बार उनको कहा कि ये शूद्र भी पंच महायज्ञ कर सकते हैं, केवल इनको ओंकार शब्द नहीं बोलना पड़ेगा, इनको नमः शब्द बोलना पड़ेगा। तो ये सब ऐसे ही चेंज होता है, ये सब को बहुत सीरियसली नहीं लेना है, जस्ट ए स्टोरी। In later Vedic age, women are allowed in ashrama for education. Yes, up to later Vedic age, she was allowed, but after that gradually declined. But from when and how, that is not much clear. Who has raised this question? Nilay. Okay. Sir, भावना पूछ रही है कि सर proliferation of caste. Please once again repeat, sir. I am unable to understand this. Okay, Bhavna. This is a question from Bhavna. Her question is, my students, कि what is proliferation of caste? She is unable to understand. So I am making clear. देखो, according to R.S. Sharma, be mentally alert. And once you will make, and please Bhavna and even some of you who find difficulty here, be mentally alert. And just after finishing it, make me clear कि whether you understand the thing or not. देखो, actually, as R.S. Sharma has tried to establish, कि up to early medieval age, the forces of regionalism became very prominent. Forces of regionalism, because he believes that there was a decline of trade and commerce and money economy and the regional economy. So there was a regionalization of economy. So every center emerged to be the regional centers. So as there was the regionalization of economy, so he tried to explain now the caste which was earlier that was spreading to a vast region. So as the regionalism appeared, so it led to the less mobility among the people. So the declining mobility of the people made the people from one caste dissociated from their own castemen from other region. So a long time they remained dissociated. So as a result of remaining dissociation, in course of time, after 2 to 3 generations, they started to think as if they belong to other caste and we belong to other caste. So
under a single caste, there develop different subcastes. For example, Kalhan informs that there were 36 types of Kshatriyas. So various types of Brahmins. So under a single caste, there was the, you can say, growing number of subcaste. मतलब हुआ ऐसा कि उनके अनुसार कि ये जो पूर्व मध्यकाल तक आकर जो रीजनल इकोनॉमी आ गई, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था आ गई, तो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था चूंकि ट्रेड का डिक्लाइन हो गया, मनी इकोनॉमी का डिक्लाइन हो गया, यानी मुद्रा अर्थव्यवस्था का, तो क्या हुआ कि प्रत्येक जो रीजन है वो जब रीजनलाइजेशन हुआ तो लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आना जाना कम हो गया। तो एक ही जाति के लोग जो एक क्षेत्र में निवास करते थे वो अपनी ही जाति के अन्य क्षेत्र के लोगों को अपनी जाति का न समझ के दूसरी जाति का समझने लगे। उनके बीच खान पान, रोटी बेटी का संबंध टूट गया। तो क्या हुआ कि अब एक ही कास्ट के नीचे कई सब कास्ट हो गए। जैसे ब्राह्मण्स में ही मैंने बताया कि ऋग्वेदी ब्राह्मण, सामवेदी ब्राह्मण, अथर्ववेदी ब्राह्मण, नागर ब्राह्मण, सरयुपारी ब्राह्मण, मैथिली ब्राह्मण। तो इस तरह से ये जो सब कास्ट हैं, सब कास्ट का जो नंबर्स बढ़ा, इसी के लिए टर्म आता है प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट। हिंदी में कहते हैं जातियों से उपजातियों का विकास। अब भावना एंड अदर्स प्लीज इन्फॉर्म मी, आर यू क्लियर नाउ? बी फास्ट। In Gupta age, why Vaishya status declined? Gaurav, yesterday I have mentioned this thing. In Gupta period, the status of Sudraj, the status of Vaishya declined due to the fact that, as R.S. Sharma believes, that possibly Vaishyas got dissociated from performing sacrifice and education. मैंने आर्य शर्मा का कहना है कि संभवतः वैसे शिक्षा और यज्ञ से दूर होते गए और इस कारण उनका सामाजिक दर्जा नीचे गिर गया। Sunifa getting sir to Duij can't understand twice born. Sunifa twice born means कि actually Brahmin, Kshatriyas and Vaisyas who were given the status of twice born and Dvija. So once one birth is the real birth whenever he was born in actual sense, and the second one birth was when among the 16 sanskaras Sunifa, I have mentioned about a sanskara that is called Upnayan sanskara. So once the Upnayan sanskara was performed, so after performing Upnayan sanskara, then you will come to know that as a result of this Upnayan sanskara, then it is supposed that it is the second one birth. That after Upnayan sanskara, you are just sacred thread. Upnayan sanskara means sacred investiture or sacred thread. उसको कई जगहों पर जनेऊ बोलते हैं. तो after that they were entitled for education and it was the second birth, Upnayan sanskara. So that's why, because Sudraj could not perform Upnayan sanskara. Upnayan sanskara or the sacred thread could have been attributed only to the upper three Varnas, Brahmins, Kshatriyas and Vaisyas. So that is the concept of twice born. So प्रकाश करें कि क्या शूद्रों को एजुकेशन अलाउड था? No, Sudraj were not allowed Prakash, Sudraj were not allowed education. Sir, Kankan पूछ रहे हैं, can sir please explain Stridhan for one time? Stridhan means कि whenever a girl was married, so at the time of her marriage, she was getting a lot of gifts from the bride party and bridegroom's party. For example, jewelries, cash, etc. So whatever amount she was getting, so it was called Stridhan. And she was having the full right over the Stridhan. And one interesting thing, on Stridhan, she can give to her daughter. Daughter was having the first right, then the son, you know. And later, even the category of Stridhan and the items of Stridhan was going to be multiplied. For example, Vigyaneshwar even added the division of family property in the category of Stridhan. So items were multiplied later, but it was the basic concept of Stridhan. The last question, Muskan Kare sir unable to understand the difference between Sudraj and untouchable.
Are Sudraj are the Sat Sudra. Sudraj are the part of Muskan. Sudraj are the part of fourfold Varna system. Fourfold Varna system: Brahman, Kshatriya, Vaisya, and Sudraj. So Sudraj were inferior to upper three Varnas, but they were not so inferior as to fall into the category of untouchables. The Sudraj were supposed to serve the upper three Varnas, to provide service, but they were in touch with the upper three Varnas. Then they were providing service, but untouchables were thrown out from the fourfold Varna system. So sometime untouchables were called Pancham, the fifth one, outside of fourfold Varna system. Okay, sir. Now you are going to observe religion, and once again, my students, religion and philosophy. So you people have to observe this religion and philosophy. Firstly, culture. So observe this diagram, culture. अब देखो, in culture, what you people have to do. देखो, this is the diagram. I am making the diagram here. Here, political factor, background, because you have made a study of political factor, economic factor, and social factor. So you people may be a bit, you can say a bit confused, कि possibly the knowledge of political factor, economic factor, and social factor is simply meant for the prelims examination. But my students, here I have to inform you that this political, economic, and social factor, the knowledge of all the three factors, is having a dual purpose. Dual purpose means that it is meant for prelims examination as well, but apart from prelims, you can say political, economic, and social factors are giving you some advantage in the knowledge of culture as well. मतलब इससे आपको कल्चर भी ज्यादा क्लियर होगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर क्लियर होने से. पॉलिटिकल फैक्टर, economic factor, social factor. Because without political, how can you explain the cultural changes? And sometimes you will even find the question. Social, even economic factor. अब suppose करो if the some period is marked by the economic upsurge, so definitely the economic upsurge was going to help a lot the cultural upsurge. तो जिस समय इकोनॉमी का उत्थान होगा तो कल्चर का तो प्रोग्रेस होगा ही, तो कल्चरल फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब यहां पर देखो, फर्स्टली रिलीजियन एंड फिलॉसफी, then art and architecture, sorry गलत हो गया, लैंग्वेज एंड लिटरेचर. लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, just 1 minute. Art and architecture. I mean, art and architecture, various type of architecture, sculpture, paintings, music and dance, all types. Then science and technology. So then you will do the cultural part, my friends, cultural part. अब now start from religion and philosophy. From where to start?
Actually, we are going to cover the part 2. Part 2 means you have to start from Vedic period and we have to continue up to early medieval age. So from Vedic period to early medieval age. So start here firstly religion and philosophy. Religion and philosophy, and that is Vedic period. So my students, here you can say you find here the basically Vedic religion. Ab how and why I am making clear. Vedic religion. One factor is deification of nature. Deification of nature. Of deification of nature, in place of deification of nature, here you find the term in my study material, and that is here look at divinization of nature. But in place of divinization of nature, the better word is deification of nature. Deification of nature means कि प्रकृति के अवयवों की पूजा, प्रकृति के अवयवों की पूजा. Actually, here you are informed that whether it may be Rigvedic religion or the later Vedic, in both the common point is that the Aryans, if they could not solve the mystery of nature, so they simply deified them. मतलब प्रकृति के जिन रहस्यों को नहीं सुलझा सके उन्होंने उसको देवता बना दिया. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से अर्थ गॉडेस, स्काई गॉड, ओके, दैट इज कॉल्ड आकाश, अंतरिक्ष. देन यू कैन से फायर गॉड, वाटर गॉड, you can say the god of rain, the god of war. So whenever they could not solve the problem of the nature, they simply, you can say, deified the nature. यानी प्रकृति का दैवीकरण इसके एक महत्वपूर्ण फीचर है. दूसरा, predominance of male gods. Male gods. अब whether it may be Rigvedic period or later Vedic period, you will find that the predominance of male gods. In male gods, you will find the three highest gods in Rigvedic period. So these gods were, Indra, Agni and Varuna. Indra was the god of war and the god of rain. He was leading the Aryan army in war, symbolizing the god of war. And he was also a god of rain. He rescued the water from a demon, Vitra, and then saved the water. He was a god of rain. Then you can see Agni. Agni was the god of priest and the god of sacrifice, because the sacrifice could not be performed विदाउट सपोर्ट ऑफ अग्नि. तो अग्नि जो थे वो पुरोहितों के देवता थे और अग्नि यज्ञ के देवता थे. एंड द फायर वॉज यूज्ड फॉर क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एज वेल. सो फायर वॉज प्लेइंग द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ आर्यंस बिकॉज इट वॉज क्लियरिंग द फॉरेस्ट. एंड हियर यू फाइंड कि अग्नि वॉज just like the mediator between man and God, because whenever you are performing sacrifice, you are putting oblation within Agni, and it is through the smoke from the fire, so that is carrying the, you can say, oblation to the you can say invoked God, the God who is invoked. So it is through the smoke of Agni they are getting their own oblation. तो अग्नि क्या था कि वो देवता और मानव के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था, और मानव के द्वारा जो देवता को चढ़ाया जाता था वो ईश्वर तक पहुंच जाता था.
every Aryan was just, you can say, lighting the fire in their house. And the one important god is Varuna. Varuna was, there was a specific nomenclature for Varuna, you should not ignore. He was called Ritas Gopa. Ritas Gopa. Ritas Gopa means कि he was the very specific type of god. मतलब he was protecting the cosmic order. Here the Rit means, Rit was symbolizing cosmic order. So Varuna was just protecting the cosmic order, so he was called Ritas Gopa. तो वरुण एक रितस गोपा इस तरह के गॉड थे. Then in later Vedic period, these three gods, that is called Indra, Agni and Varuna, they were overshadowed by three new gods. Who were the three new gods? They were Prajapati, Vishnu and Rudra. Prajapati was just like the creator god, Vishnu was just nourisher god, and Rudra was, now you can say, destroyer god. If someone is going to ask you, for the first time, when have you heard about Vishnu and Rudra? You have heard about Vishnu and Rudra even during Rig Vedic period. Vishnu was an important god even during Rig Vedic period. He was the god of three steps. Lesser god, not important god. So likewise you can say Rudra was, you can say, a lesser god during Rig Vedic period, but in later Vedic period he became the important god. So these three gods, Prajapati, Vishnu and Rudra, these were the important gods in later Vedic period. हाँ मिस्टर अंकुर. कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर deity और god. नहीं, deity, देवता, both are almost same. No problem at all. You can even use the term god, no problem at all. Deity is the word, you can use he was a deity as the lesser god, but it was also, you can use the term like Indra god, Vishnu god, no problem. Okay. And then you can say one important thing was that these gods, they were, you know, there were some goddess, some goddesses, but their inferior position. It does not mean that there were not goddesses. You will find the reference to goddesses. You will find the references to goddesses because you find in Rig Vedic, Usha, Nisha, Ratri, Aranyai, then later Vedic period, Indrani, Agniya. So these were goddesses. But their position was inferior to God. So that is the difference between the female deity and the male deity. Female deity was inferior to the male deity. And fourth one you can say, fourth one you can say, polytheism. Polytheism, but not idol worship. Polytheism but not idol worship. मतलब बहुदेववाद तो था, पोलिथिज्म का मतलब है बहुदेववाद, बट नॉट आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा नहीं थी. बहुदेववाद था, लेकिन याद रखना वैदिक काल, चाहे ऋग वैदिक पीरियड हो या लेटर वैदिक पीरियड हो, देयर वाज नो आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा नहीं थी. देखिए, Vedic religion was having this worldly approach. Vedic religion was having
this worldly approach as Vedic religion was having this worldly approach as there was Vedic religion was having this worldly approach as there was material happiness was the objective. Now here my point is कि why did Aryans worship? What was the objective of worship? The objective of worship was not salvation. My students, just try to understand कि the objective of worship was not salvation. मतलब उपासना या पूजा का उद्देश्य मोक्ष नहीं था. मोक्ष क्या होता है आगे बताऊंगा. मोक्ष क्या था? उनका ऑब्जेक्टिव मोक्ष नहीं था. उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? मटेरियल हैप्पीनेस था. वो भौतिक सुख की प्राप्ति करना चाहते थे. मतलब मटेरियल हैप्पीनेस. इन फैक्ट दे हैड टू वर्शिप. They were worshipping with the objective of multiplying the progeny, the animal wealth, as well as the economic wealth, animal wealth as well as progeny. मतलब वह चाहते थे प्रजापुत्र और धान्य की रक्षा करना चाहते थे. वो कोई मोक्ष वोक्ष नहीं चाहते थे. आज भी आपके यहाँ जो सैक्रिफाइस होता है उसमें जो पंडित जी आते हैं, याद रखिए, तो आपके घर में कोई ऑस्पिशियस डे होता है उस दिन, या कोई इस तरह का एक बिग परफॉर्मेंस होता है, एक हो सकता है गृह प्रवेश हो सकता है कोई मैरिज हो, या कोई इस तरह के ऑस्पिशियस डे है, कोई नया मेहमान आया है, कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो फिर पंडित जी आपके यहाँ सैक्रिफाइस करवाते हैं. पंडित जी आपके यहाँ पूजा करवाते हैं, जिसको रिचुअल्स बोलते हैं, सैक्रिफाइस है. हाँ, अब फर्क यह है कि जैसे वैदिक पीरियड में एनिमल स्लॉटर होता था, अब एनिमल स्लॉटर नहीं हो रहा. अब उसके बदले वो फल फूल अनाज यानी ग्रेन्स का, फ्रूट्स का, इसका वो स्लॉटर करते हैं, लेकिन वो भी सैक्रिफाइस है. तो वो जो सैक्रिफाइस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है पता है? मटेरियल हैप्पीनेस. वो निर्वाण या सैल्वेशन की बात नहीं करते. तो ये फर्क आता है दोनों में. सपना कहने कि why goddesses are inferior? Because it was the paternalistic society. पितृसत्तावादी समाज था. As society was paternalistic, so there was the predominance of the male gods. Then you come to know mode of worship. Mode of worship, prayer and sacrifice. Mode of worship, prayer and sacrifice. मतलब at that time जो mode of worship था, that was जो पूजा का प्रकार था, that was either प्रार्थना, prayer and then sacrifice. But my students, here I have to inform you कि during the Vedic period the prayer was more prominent. But up to later Vedic period, the sacrifice became predominant. So during later Vedic period, you will come to realize that the sacrifice was going to be too much dominant and too much influential. So sacrifice, and particularly during later Vedic period, the slaughter of animals and pronouncing of mantras became part and parcel of the sacrifice. So later Vedic religion was going to be more and more ritualistic. मतलब जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें एनिमल्स का सैक्रिफाइस, स्लॉटर और प्रोनाउंसिंग ऑफ मंत्रास, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था. इसलिए तुम देखोगे कि जो लेटर वैदिक रिलीजन है वह बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक हो गया, बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक. उषा कह रही है कि व्हाट वाज द कांसेप्ट ऑफ रीता? Usha. Actually, Usha, in fact, concept of Rita was, I have told you कि that was cosmic order. माने रीता का एक कॉन्सेप्ट था, बड़ा वेग कॉन्सेप्ट था. वो था कॉस्मिक ऑर्डर.
अब कॉस्मिक ऑर्डर को मैं अगर उषा ज्यादा एक्सप्लेन करने लगूं तो उसमें आप और भी उलझ जाओगे। मेरे पास तो एक्सप्लेन है, लेकिन हम उसमें अगर हाथ डालेंगे उषा तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट मोर कॉम्प्लिकेशन फॉर यू। देखो, in Rig Veda it was called, once again my students are making, in Rig Veda it was called कि it was through playing dice मतलब पासा समझते हो, जुआ। थ्रो प्लेइंग, जो डाइस खेलते थे तो ऐसे हाथ से ऐसे करके फेंकते थे, उस क्या बोलते हो उसको, डाइस को ऐसे फेंकते थे, जिसमें आपने कभी देखा होगा महाभारत वगैरह में पाशा खेलते हुए, जो शकुनी के बारे में आपने सुना होगा, जो धृतराष्ट्र के साथ, सॉरी युधिष्ठिर के साथ खेला था। तो उसमें जब पाशा फेंकते हो ना तो आपका हाथ ऐसे होता है। सो अकॉर्डिंग टू ऋग वेदा कि इन फैक्ट थ्रू प्लेइंग डाइस यू कैन प्रोटेक्ट रिथ, दैट इज हैविंग अ सिंबॉलिक मीनिंग कि इफ यू आर ओपनिंग योर हैंड इट मीन्स कि रिथ वुड बी प्रोटेक्टेड। व्हाई? बिकॉज यू आर ओपनिंग द हैंड, इट मीन्स यू आर नॉट एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, and if you will not accumulate wealth, there will be the free flow of the product and free flow of product, and if you are going to accumulate, that will create inequality in society, and that is a tribal society, so accumulation is not allowed. There should be free consumption and production, and if someone is going to accumulate it, that will create inequality, so Rith would be, cosmic order would be disturbed, so Varuna had to protect the cosmic order. उषा में समझा पाया आपको, हाँ या ना? मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं कि खुले हाथ से जब आप रहते हो तो कॉस्मिक ऑर्डर की रक्षा होती है। जैसे जुआ खेलने में हाथ खुला रहता है, तो हाथ खुला है तो इसका मतलब है आप चीजों को संग्रह नहीं कर रहे हैं। संग्रह करोगे तो दूसरा गरीब हो जाएगा, और गरीब हो जाएगा तो विद्रोह करेगा, तनाव होगा सोसाइटी में, टेंशन होगा, और रित कॉस्मिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, ये कहना है। तो मैंने जानबूझ के उस इसको अवॉइड किया था, लेकिन आपने जब मुझे अब एक्सक्लूसिव डिमांड किया तो मैंने बता दिया। अब पता नहीं मैं आपको समझा पाया या नहीं, थोड़ा सा अगर बता दोगे तो फिर मुझे क्लियर होगा। उषा ओके कर दिया? ओके ठीक है। संजना पूछने से why not idol worship as there is crafting? Sanjana, I have just started religion. Simply I will request you people to give me the time so that I will make you understand. You will find, देखो, sometime you people will have the patience and just wait for the further topic. So then your every question would be answered. What you know as the idol worship or bhaktism, etc. So they were the product of non-Aryan elements. And how did the assimilation between Aryan and non-Aryan elements become possible during early Christian centuries? So I'll make this point clear. Idol worship is the not trait of Aryans. It was not the contribution of Aryans. Aryans didn't prefer idol worship. What is henotheism in Greek Vedic religion? Henotheism, yes. Pihu. कौन? Pihu. Pihu, in fact, henotheism and cathnotheism, they are the two terms, but both are synonym for each other. The henotheism and cathnotheism means कि to in course of worship of God, to take every god superior alternatively. If you are taking every god superior alternatively, that is henotheism or cathnotheism. मतलब आप ईश्वर की पूजा करते हो और अलग अलग समय में अलग अलग देवता को श्रेष्ठ समझते हो, सुपीरियर समझते हो, तो ये कहते हैं हेनोथिज्म। अब जैसे हिंदू मैथोलॉजी में देखो, अब ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसका वास्तविक सुपीरियर कौन है। आपको अगर किसी एक से कुछ सुपीरियर गॉड को खोजना है तो मुश्किल हो जाएगी। कभी देखोगे ब्रह्मा विष्णु शिव के पास पूजा कर रहे हैं तो वहां पर शिव सुपीरियर लगेंगे, दूसरी बार आपको ब्रह्मा के पास शिव और विष्णु पूजा कर रहे हैं तो लगेगा भाई ब्रह्मा सुपीरियर हैं। कभी देखोगे ब्रह्मा और विष्णु ब्रह्मा और शिव दौड़े हुए विष्णु धाम में गए हैं और विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए अपना वो ऐसे अकर के लेटे हुए हैं जैसे लगता है कि कोई खास इनको महत्व नहीं दे रहे हैं, तो लगेगा अरे विष्णु सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर तुम देखोगे कि ऐसा डेमोन आया, एक ऐसा राक्षस आया कि सारे गॉड्स को हरा दिया
तो सारे दौड़ते हुए देवी के पास गए तो देवी ने जाके राक्षस को मारा। और अंत में कहते हैं एवरी इज वन एंड सिंगल। सो हेनोथिज्म एंड कैथनोथिज्म इज in one sense henothism, there is polytheism, and from polytheism the henothism or cathnothism, and the next step is monotheism. So henothism and cathnothism is just, you can say, a step a step beneath the monotheism. The next step is monotheism. Okay. So mode of worship, prayer and sacrifice, and particularly you can say during later Vedic period, the religion was going to be so ritualistic. Slaughter of animals, pronouncing of mantra, the reaction set in up to the end of later Vedic period. The reaction set in the form of Upanishadic philosophy. So my students, Upanishadic philosophy, we are going to link it to Buddha age, not proper later Vedic age. We are going to link this Upanishadic philosophy to Buddha age. So now we are just moving to Buddha age now. Buddha age. Okay. Just check. Buddha age. Excessive ritualistic Vedic religion. Vedic religion. अब reaction set in during Buddha age. Upanishadic philosophy. Buddhism. Jainism. Buddhism, Jainism, and materialistic thinkers. My students, in this diagram you should not get confused. Rather, this diagram is making you just going to clarify your vision, or you can say make your vision more clear. Here you are informed that when later Vedic religion, which was going to be more and more ritualistic in nature, so reaction set in. And once the reaction set in, so there were the different modes of reaction. One mode is the Upanishadic philosophy, second one Buddhism, then Jainism, and then you can say the so many materialistic philosophers. So here my students, you will be informed that what you know as the Buddha age, so they were having the certain features, you know. The first of all, there was the multiplicity of religious sects. The Buddhist text has mentioned about 62 religious sects, and Jaina text mentions about 363 religious sects. So multiplicity of sects is the one of the features. मतलब एक पहली जो इसकी विशेषता है वह है धार्मिक पंथों की बहुलता. बहुत सारे धार्मिक पंथ इस समय आ गए हैं. नंबर वन. नंबर टू, यू विल फाइंड दैट कि most of the religious sects express their faith in the concept of karman, rebirth and salvation. Most of the sects, but there are exceptions. For example, you can say here I have cited the name of materialistic thinkers. I will just make you familiar with them. So they didn't believe in the concept of karman and rebirth or salvation. Otherwise, most of the sects, you can say, believed in the concept of karman, rebirth and salvation. मतलब कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष, इस अवधारणा में ज्यादातर सेक्ट विश्वास करते थे. अब देखिए, अब कैसे रिवर्थ का कॉन्सेप्ट आया. तो सबसे पहले रिवर्थ का कॉन्सेप्ट आया, एक उपनिषद है,
उस उपनिषद का नाम होगा बृहदारण्यक उपनिषद। मैं आपको देखो, अभी लिटरेचर में मैं टेक्स्ट का नाम ले रहा हूं, लेकिन टेक्स्ट का नाम लेने के बावजूद भी हम आपको क्रमबद्ध रूप में टेक्स्ट करवाए नहीं है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि भाई सर बार बार टेक्स्ट का नाम ले रहे हैं और ये टेक्स्ट है कौन। बट इन कोर्स ऑफ टाइम यू विल क्लियर। जैसे देखो, एक्चुअली एक उपनिषद है जिसका नाम है, क्योंकि मैं लास्ट में मैं इसके बाद रिलीजन के बाद तो लिटरेचर ही, लैंग्वेज लिटरेचर कराऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। बृहदारण्यक का उपनिषद। तो इसमें क्या हुआ कि बृहदारण्यक का उपनिषद मेंशंस फॉर द फर्स्ट टाइम कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल मींस रीबर्थ। एक्चुअली अर्लियर इट वाज बिलीव्ड दैट कि आफ्टर डेथ someone is going either in the house of father or house of clay, यानी पितृलोक में चला जाता है, and he remained there, he didn't return on this earth. But gradually such an idea evolved कि once he is just going into the house of father or house of clay, house of father, but he does not remain there forever. After some time he was just moving to space, then from space he moved towards cloud, and from cloud, in the drops of rain, he is falling down on the earth, and then he was going to be reborn in different forms. For example, human beings, animals, insects, plants, etc., etc. So for the first time बृहदारण्यक उपनिषद has mentioned about the concept of rebirth. मतलब मैंने आपको जो समझाया समझ में आया होगा कि ऐसी धारणा आई कि भाई मरने के बाद, पहले क्या था कि मरने के बाद लोग चले जाते हैं हाउस ऑफ फादर में या हाउस ऑफ क्ले में और परमानेंटली वही रह जाते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट है बदलने लगा, उसमें कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। लोग मरने के बाद पितृलोक में तो जाते हैं, कुछ समय के बाद वहां से अंतरिक्ष में चले जाते हैं, अंतरिक्ष से चले जाते हैं बादल में, और बादल से वर्षा की बूंद बनकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं, और फिर कीट पतंगा और मानव के रूप में पैदा, मानव, पशु, प्लांट्स, कीट पतंगे, इंसेक्ट्स किसी रूप में पैदा ले लेते हैं। तो जब पहले फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल अपीयर्ड, सो सम पीपल आर गोइंग टू बी इंथुजियास्टिक, अरे this is not the end of life, once again we will get opportunity for enjoying the life, so someone is welcomed the idea. But some others started to think, yeah, it is too much monotonous, too much tormenting, and too much boring to be born and reborn again. So they try to find out the solution, ki what is the solution for that. So they discovered that ki basically the cause of rebirth is karman. It is due to karman rebirth take place. And the solution of rebirth is salvation, moksha. So different religious sects find different name for salvation. For Upanishad it was moksha, for Buddhism it was nirvana, for Jainism it was kaivalya. So different name for salvation, you know. मतलब जब ये आइडिया आया कि लोग फिर दोबारा जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म होता है, तो दो तरह की प्रतिक्रिया हुई। कुछ लोग तो काफी खुश हुए कि अरे यार चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, ये जीवन की समाप्ति नहीं, इसके बाद फिर हम पैदा होंगे, इसके बाद और फिर हम पैदा होंगे। कुछ लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत मोनोटोनस है, बार बार पैदा होना, बार बार मरना। तो उन्होंने एक पता करना शुरू कर दिया कि भाई इसका कारण क्या है। तो फिर पता चला कि इसका कारण है कर्म। जो हम कर्म करते हैं उसी कारण से हमारा रिवर्थ होता है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है मोक्ष। तो मोक्ष का सभी ने अलग अलग नाम दिया। अब देखो एक बात बताओ, डू यू अंडरस्टैंड मोक्ष, सैल्वेशन? प्लीज माय स्टूडेंट्स टाइप इन यस एंड नो। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मोक्ष एंड डू यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मोक्ष एंड व्हाट हैपेंस इन मोक्ष? Being the student of history and culture, I just want to know, do you know the meaning of moksha or salvation? Please make me clear through typing either yes or no. Mix it.
देखो, be mentally alert. Are you alert mentally? Then just try to follow me. देखो, मोक्ष is a mental stage in which you will have the complete peace and free from worldly bond. You are living in this world, but neither happiness nor sorrow, neither ambition nor defeat, neither victory nor defeat. Nothing is going to influence you. And you are you come into the permanent moment of happiness. आनंद, तुम्हारा मस्तिष्क आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है, सारे वर्ल्डली पुल से फ्री हो जाता है, तो वो मोक्ष की स्थिति होती है और हमारा कर्म विनष्ट हो जाता है। क्योंकि ऐसा पाया गया, कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा में यह पाया गया कि हम जो कर्म करते हैं वो संचित होता है और उस कर्म के कारण हमारा पुनर्जन्म होता है। लेकिन जब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो सारा कर्म नष्ट हो जाता है और हम इस संसार में जब तक रहते हैं तब तक बिल्कुल सांसारिक बंधनों से मुक्त रहते हैं, और जिस दिन संसार छोड़कर ऊपर जाते हैं उसके बाद दोबारा नहीं आते। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। My students, once again I am repeating कि according to this, in fact the karman is the cause of rebirth. Whatever karman, अब here I am not using the term sukarman or kukarman, and bad karman or good karman. Simply karman. If you have done the good karman, it means you are going to be born into the royal family. If you have done the bad karman, then you can be born into either an insolvent and poor family, or even in the form of animals or insects, whatever may be. But here the main concern of the, you can say, saint or seers is to be free from the cycle of birth and death. Neither royal family nor a poor family, nothing else. I don't like to come again on this earth. This is the basic emphasis. So my point is, my friends, when someone is going to a state of salvation, so it was the complete moment of mental happiness and the, you can say, freedom. He is free from all the worldly pulls and worldly bonds. So far as he lives in this world, he is enjoying the complete peace, and once he dies, he never comes again. So this is the stage of salvation. Different names have been given by different sects to this salvation, and this name is moksha, nirvana, kaivalya. Different names for the different sects. So in this way you are just going to discuss about. Sir, Akshara पूछ रही है कि sir, can you please explain why Varna system became more complex during Buddha age? Akshara, yesterday I have explained, but possibly you have not noticed it, why the Varna system was going to be complex during Buddha age. Akshara, how can you forget कि वर्ना सिस्टम was having the deep relationship with the economic change. I have told you that during Rigvedic period there was the very limited surplus production. So society was more or less an egalitarian society. There were three varnas: priest, Rajanya, and the common people. But it was during later Vedic period, means at the end of Rigvedic period, in Purush Sukta, for the first time you come to know about fourfold Varna system. Because if Rigvedic society was a tribal society,
But agriculture definitely developed during later Vedic period with better scope for production surplus. So it led to the further division in society and the rise of fourfold Varna system. Whenever you are coming to Buddha age, Akshara, I am addressing you. So up to Buddha age, there was the expansion of agriculture in the middle Gangetic basin. And as there was the expansion of agriculture in middle Gangetic basin, so it was the quite fertile region, and with the use of iron tools, clearance of forest, development of agriculture, excessive surplus production leading to the multiplication of craft, trade, and finally second urbanization. So economy developed further, so it divided society further, because now there was the larger production surplus, so high born, or you can say high caste, like the Savarnas, like the Brahmins, Kshatriyas, they try to had the better control over the surplus production. So that's why Brahmins consciously complicated the Varna division, as they were having the major claim over the surplus production. So that is the question. Akshara, are you clear? So they were querying, sir, please ask how someone got salvation. Ask. How someone got salvation. They are the different paths. Divya, actually you have asked me the question ki how someone got salvation. Actually, it was just like the different shops of medicines. Today you find the naturopath, allopath, homeopath, Unani, different medicine schools, and they are giving their own solution to the common disease. So likewise at that time, like the different shops, the different sects were established, and they are started to give solution. Like for Brahmins, from Upanishadic philosophy, the solution is the realization of Brahma and unity of Brahma and Atma. For Buddhism, there was the solution was that is eightfold path. For Jainism, you can say solution was the mortification of sense organs, or the penances, the great penances, that is called Kaya Klesh. So all are giving the different solution ki, all are just making propaganda of their own religion ki we are give you the solution to the being free from the cycle of karma and rebirth, and we will provide you the salvation. तो डिपेंड करता है कि अलग अलग सेक्ट उसका अलग अलग सोल्यूशन बताता है, लेकिन स्टेज वही है कि मेंटल पीसफुल स्टेज ऑफ माइंड. सर वेबसाइट पे कुणाल करेंगे सर, इन स्टडी मटेरियल इट इज रिटन वासुदेव कृष्णा अ नॉन आर्यन डेटी. हाउ? जस्ट वेट Kunal, wait. I have mentioned about Vasudev Krishna in post-Maurya period. So please don't go beyond the topic. You are presently in Buddha age, and let me move from topic to topic. Otherwise, your syllabus would not progress. So please allow me to carry on further. Okay. And I'm requesting you people, whenever you have to ask the question, either from the, you can say previous, or from the contemporary, but you will not ask me the question from the subsequent topic, which I am going to take in future, please. Now you can say different sects of what is the Upanishadic philosophy. Upanishadic philosophy is very simple. It was giving emphasis over knowledge. According to Upanishads, you have to simply realize that I am Brahm, and you will be free from cycle of birth and death, and that is the salvation, moksha. According to Upanishads, Brahm and soul are one and the same. The Brahm and soul are one and the same. Whatever difference appears, it is due to the lack of knowledge. What sort of knowledge? Not the knowledge of history and geography. The knowledge of I am Brahm. Once you are going to realize that I am Brahm, you are free from the cycle of birth and death. Then you come to know that is Upanishadic philosophy. Then comes the turn of Buddhism. So Buddhism has viewed this
world in following ways. According to Buddhism, मतलब अब उपनिषद का फिलोसफी समझा, इंग्लिश वाले समझ गए ना। जैसे उपनिषद का कहना है कि ब्रह्म और जीव दोनों एक हैं, हमें इन दोनों के बीच जो भी अंतर नजर आता है वह अज्ञान के कारण, जिस दिन हमें ज्ञान मिल जाएगा कि ब्रह्म और जीव एक हैं, उसी दिन हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ओके, तो ज्ञान माने बुद्धिज्म में अगर आपसे पूछा, सॉरी ये उपनिषद, तो पूछा जाए उपनिषद के लिए मोक्ष का साधन क्या है, तो कहोगे ज्ञान। उपनिषद बोलता है ज्ञान से मोक्ष मिलता है। अब आइए बुद्धिज्म पर। तो बुद्धिज्म हैज गिवन एंड प्रोपाउंडेड you can say three different perceptions about the world. According to Buddhism, the world is full of sorrows. यह संसार दुखमय है, ये बुद्धिज्म का कहना है। एंड इट इज फ्रॉम हेयर यू नो कि द फोर आर नोबल ट्रूथ appears. From Buddhism, चार आर्य सत्य यानी फोर नोबल ट्रूथ appears from Buddhism, from this perception कि the world is full of sorrows. यह संसार दुख से भरा हुआ है। So you will find there is दुख, सर्वम दुखम, दुख समुदय, दुख निरोध एंड दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। There is sorrow, there is cause of sorrow, there is the cause of sorrow and there is the solution to sorrow and there is the method to the solution to sorrow. तो दुख के निदान के जो उपाय हैं उसी में उसने कहा अष्टांगिक मार्ग, eightfold path. So he just gave the solution in eightfold path, Buddhism. Then comes the turn of the second one perception of Buddhism is the world is transitory. यानी वर्ल्ड इज मोमेंटरी, मतलब एट एवरी मोमेंट द वर्ल्ड इज चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग। अब सपोज आई एम एड्रेसिंग यू हियर, बट नाउ आई एम नॉट हियर, इन माई प्लेस देयर इज समवन एल्स। सो इट मीन्स कि द वर्ल्ड इज ट्रांजिटरी और मोमेंटरी, एवरी मोमेंट इट इज चेंजिंग। सो यहीं से बुद्धिज्म का क्षणभंगवाद का दर्शन निकलता है, क्षणभंगवाद। And third one perception of Buddhism is the world is soulless. यह विश्व आत्मा विहीन है। अब देखो, here Buddhism created complication because if Buddhism denied soul, तो if Buddhism could have denied even karman and rebirth, तो there could have been better. But on the one hand, Buddhism denied soul, but simultaneously accepted the concept of karman and rebirth. So if you are going to accept rebirth but not soul, so question arises कि then what goes from one birth to another birth? What goes from one birth to another birth? मेरा क्वेश्चन आप लोगों ने समझा? मेरा प्रश्न यह है कि बुद्धिज्म ने कहा आत्मा नहीं होती है। अगर आत्मा नहीं होती है तो आप कर्म और रिवर्थ को भी, यानी कर्म और पुनर्जन्म को भी अस्वीकार कर देते, तब तो चलता। लेकिन एक तरफ आप बोल रहे हो कि आत्मा नहीं होती है और दूसरी तरफ आप कर्म और रिवर्थ को अस्वीकार नहीं कर रहे हो, तो क्वेश्चन यहां एराइज होता है कि फिर एक जन्म से दूसरे जन्म में क्या जाता है। सो माय स्टूडेंट्स, हियर बुद्धिज्म ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन थ्रू अ फिलोसॉफी ऑफ प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पादा, इसको बोलते हैं द थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। अब व्हाट इज दिस थियरी? तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी कि if the cause of sorrow is birth, so cause of birth is karma. So that is, he just tried to find out causative relationship between karma, rebirth and sorrow. If you have to annihilate sorrow,
So you have to annihilate karman so that you will be free from rebirth. Because so far as you are reborn and born, you will feel sorrow. There is no way out of the sorrow except nirvana. Once you are getting nirvana, so that is the peaceful moment of mind, and you will free from the cycle of rebirth. And once being free from the cycle of rebirth, then you will get salvation. अब मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब आप फिलोसफी पढ़ते हो तो फिलोसफी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. जैसे बाकी सब्जेक्ट सोशल साइंस और फिलोसफी में एक फर्क यह है कि बाकी सोशल साइंस में तुम पूछते हो व्हाट इज एंड हाउ एंड व्हाई, बट इन फिलोसफी में केवल पूछो व्हाट बट नॉट पूछो व्हाई, बिकॉज फिलोसफी इस व्हाई का जवाब नहीं देता है. तो इसलिए आप लोग व्हाई मत पूछना, सिर्फ पूछना व्हाट. ओके, तो मैं आपको बताता हूं. जैसे इसका ये कहना है कि जैसे दुख का कारण जन्म है, उसी तरह जन्म का कारण कर्म फल रूपी चक्र है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. तो इसका यह कहना है कि अगर आप जैसे आप जन्म लेते हो तो दुख होता है. दुख इसलिए होता है कि आप जन्म लेते हो, तो जन्म इसलिए लेते हो कि आप कर्म करते हो. तो थ्रू पॉजिटिव रिलेशनशिप उसने एक्सप्लेन किया कि एक जन्म से दूसरे जन्म में आत्मा तो नहीं जाती है, परंतु कर्म जाता है. मतलब इवन इफ someone dies, his karm does not getting annihilated, rather his karm is resulting into rebirth. एक दूसरा आदमी आपकी जगह पैदा ले लेता है जो आपके कर्म का फल भोगता है, और ये साइकिल चलता रह जाता है. आपके कर्म का फल एक दूसरा व्यक्ति भोगता है जो ठीक आपके बाद आता है, और ये साइकिल तोड़ना चाहते हो तो फिर आपको निर्वाण लेना होगा. बिकॉज निर्वाणा इज द ओनली सोल्यूशन, बिकॉज थ्रू निर्वाणा यू कैन एनिहिलेट योर कर्मन एंड नो वन इज गोइंग टू बी रिबॉर्न अगेन, एंड इट इज द फाइनल ब्लोन आउट. सो दैट इज द सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म. And so this is the philosophy of Buddhism. And then comes the turn of Jainism. अब जैनिज्म की फिलॉसफी क्या है मैं आपको बताता हूं. जैसे जैनिज्म ये कहता है अब देखो बुद्धिज्म का इस वर्ल्ड के विषय में जो परसेप्शन है वो क्या है, मोमेंटरी है. एवरी मोमेंट दिस वर्ल्ड इज चेंजिंग, एंड जैनिज्म ट्राई टू एस्टैब्लिश दैट कि दिस वर्ल्ड इज इटर्नल. दिस वर्ल्ड इज इटर्नल. इट इज having neither beginning nor end. According to Jainism, the world is eternal. It is having neither beginning nor end. Neither beginning nor end. But there are cycle of upsurge and decline. ये फिलोसफी है, मेरे मैटर में दे दिया है, आप देख लेना. मतलब यह बोलता है कि देखो, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल देता हूं ताकि आप लोग समझने में प्रॉब्लम ना हो, कि एक्चुअली द वर्ल्ड है वो इटर्नल कहते हैं, हिंदी में शाश्वत है, माने अनएंडिंग है. इसका ना कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड है. लेकिन हां, इसमें उत्थान और पतन का चक्र आता रहता है. माने देयर आर द साइकिल ऑफ अपसर्ज एंड डिक्लाइन. So this cycle of upsurge was known as Utsarpini. He has given the name Utsarpini for the cycle of upsurge. So इसने कहा कि whenever there is the cycle of upsurge, तो in the cycle of upsurge, the 63 Shalaka Purush, he is using the term Shalaka Purush. Shalaka Purush means great men. 63 Shalaka Purush are born. Among the 63 Shalaka Purush, there are 24 Tirthankaras and 12 Chakravarti rulers. But whenever there is the stage of decline, that is called Avsarpini. So at the time of Avsarpini, even the size of man is going to be very smaller, because it is the phase of decline. So he simply philosophically imagined that there is the phase of upsurge and the phase of decline. In the phase of upsurge, you can say
कि द 63 ग्रेट मेन आर बॉर्न, शालाका पुरुष, मतलब इसने ये कहा कि जब उत्थान का काल होता है तो 63 शालाका पुरुष होते हैं। आप पीटी में सब कभी आपसे पूछ सकते हैं कि शालाका पुरुष की अवधारणा किस धर्म से जुड़ी हुई, विथ विच religious sect the concept of Shalaka Purush is associated, then you are supposed to reply that is Jainism. एक कल्प वृक्ष की अवधारणा भी है। जैसे आपने कभी हिंदू धर्म में एक कामधेनु गाय की अवधारणा सुनी होगी, जो गाय थी वो हर इच्छा पूरी करती है। सो लाइकवाइज कल्प वृक्ष माने व्हाट एवर यू विश शी विल प्रोवाइड यू, सो दिस कॉन्सेप्ट इज विद जैनिज्म, वो भी कॉन्सेप्ट है। जैसे कामधेनु का हिंदुइज्म में है कि कामधेनु गाय है, जो कुछ भी मांगोगे वो देगा, उसके दूध का कभी कोई एंड नहीं है। सो यू कैन से दैट इज पॉइंट। एंड देन अवसर्पिणी, एंड अकॉर्डिंग टू जैनिज्म कि as a result of interaction between jiva and ajiva, interaction between jiva and ajiva, man according to jiva is soul, atma, and in ajiva category there are the 5 things. Please ignore them. It will simply, you can say, create problem for you. Ignore the philosophical aspect ज्यादा। अब इसमें क्या मैं बताऊं। अजीवा की श्रेणी में वो कहता है धर्म, that was, you can say, symbolizing mobility. अधर्म, which was symbolizing static stage, means कि धर्म, अधर्म, आकाश, स्पेस, काल, टाइम एंड पुद्गल, 5 के बारे में कहता है। ये 5 अजीवा है, इग्नोर कर दीजिए, हटाइए। मेन प्रॉब्लम क्या कहता है जैनिज्म कि मेन ऑब्जेक्टिव, अगर आप कैवल्या चाहते हो, जो कैवल्या वो बोलता है कि मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक जीवा फ्री फ्रॉम क्लच ऑफ पुद्गल, मतलब यू कैन से टू मेक जीवा फ्री फ्रॉम द क्लच ऑफ पुद्गल। पुद्गल कहता है कर्मन को, जो कर्मन में पीछे जो बता रहा हूं ना, उस कर्मन को जैनिज्म क्या बोलता है? पुद्गल। मैंने इसका कहना है कि अगर पुद्गल से जीवा को फ्री कर दोगे तो कैवल्या मिलेगा। कैवल्या वही कैवल्या सैल्वेशन है, मोक्ष जिसको कहता है उपनिषद है, जैनिज्म जिसको निर्वाण बोलता है, कहता है कैवल्या, इस पुद्गल से इसको मुक्त करो। लेकिन पुद्गल से मुक्त करना ही बहुत मुश्किल का काम है। इसके लिए तुमको 2 प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। यू आर फॉलो टू 2 डिफरेंट मेथड्स इन ऑर्डर टू मेक सोल फ्री फ्रॉम द क्लच ऑफ पुद्गल। वन प्रोसेस इज that is called samvara. One process is samvara. What is samvara? So samvara means actually to check the entry of pudgal into soul. टू चेक द एंट्री ऑफ पुद्गल इनटू सोल। मतलब एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कोई डायबिटीज का मरीज है, सपोज यू समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, तो इमीडिएट यू कैन से प्रिस्क्रिप्शन और इमीडिएट एडवाइस बाय द डॉक्टर इज कि इमीडिएटली स्टॉप टेकिंग शुगर, सो दैट कि द फ्रेश शुगर शुड नॉट, यू कैन से, रीच टू योर ब्लड। So that is called samvar. कि suppose if you have to be free from the pudgal, so please stop immediately the fresh entry of pudgal in your soul. That is samvara. But even if you are going to put a check over the fresh entry, so on the basis of the previous entry, your soul is already, you can say, full of pudgal. So the second one stage is nirjara.
Nirjara. What is Nirjara? Annihilation of karma. So for that you need to have the kaya clays, the great penances. Torture the body so that ki Pudgal will make you free from the soul will make you free from Pudgal. And even after torturing the body, if you are not going to make your soul free from Pudgal, the last resort was fast unto death, that is called Sanlekhna, or presently Santhara. You have to discard the body, soul would be free. So my friends, in most of the situation, Nirvana could be attained in this life, but in most of the situation, if Mahavir is the exception, and some Jambu Swami and some important saints were the exception, तो कैवल्य was normally attained through discarding the body. मैंने शरीर को छोड़ने के बाद ही कैवल्य मिलता था. फिर इसने पंच महाव्रत या पंच अनुव्रत पर बल दिया, जिसमें 5 चीजों का पालन एक भिक्षुक को करना चाहिए. और एक जो जैनिज्म का फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में केवल याद रखना, कभी पीटी में आपको, मेंस में तो जरूरत नहीं पड़ेगी इन बातों का, स्यादवादा. और अबाउट स्यादवादा देयर इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड सप्तभंगी न्याय. तो जैनिज्म में केवल इस फिलोसॉफी को आप समझिए, सप्तभंगी न्याय. ये क्या है स्यादवादा? तो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म कि देयर इज मोर एक्चुअली बिफोर मेकिंग एनी स्टेटमेंट यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज द a single truth is having many attributes. There cannot be a single truth, but a truth was having many attributes. जैसे आपको पता, उसने कहा कि सत्य की 7 अवस्थाएं होती है. तो क्या? तो पहला कहा है, दूसरा कहा नहीं है, तीसरी अवस्था है नहीं है, चौथी अवस्था है कहा नहीं जा सकता है, पांचवी अवस्था है नहीं है कहा नहीं जा सकता है, छठी अवस्था है कहा नहीं जा सकता, पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था है नहीं है, तीसरी है कहा नहीं जा सकता है, चौथी है नहीं है, नहीं पहला है, दूसरा है नहीं है, तीसरा है नहीं है, चौथा है कहा नहीं जा सकता है, पांचवा है कहा नहीं जा सकता है, छठा नहीं है कहा नहीं जा सकता है, और सातवां है नहीं है कहा नहीं जा सकता है. अब बताइए, यही उसका है सप्तभंगी न्याय. सो माय स्टूडेंट्स, एक्चुअली जैनिज्म ट्राइड टू एस्टैब्लिश दैट कि in fact truth was having 7 attributes. So you should make a statement while being careful, because even the opposite view can be a truth. तो आप जो कोई स्टेटमेंट देते हो तो उससे पहले आप केयरफुल रहो, क्योंकि उससे बाहर भी कोई ट्रूथ हो सकता है, उससे अलग भी ट्रूथ हो सकता है जो आपको समझ में नहीं आया. ये स्यादवाद की फिलोसफी है. तो दैट इज जैनिज्म है. तो आई एम स्टॉपिंग हियर टुडे. देन आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड सम मटेरियलिस्टिक फिलोसफी tomorrow, and then my students, I am requesting you to go through the rest of the study material. Then we will cross Maurya, post Maurya, Gupta, whatever I can do tomorrow. So once again you have to go through study material, and for questions you have to be prepared, so that I'll ask you 5 questions MCQ, and I will deal with some questions mains as well. On Buddhism I have brought some questions, and then even Ashoka and Kautilya I have brought the questions from mains point of view. So even from mains point of view I will discuss some questions. कुछ बच्चे पुद्गल पूछ रहे हैं. पुद्गल कर्म को बोलते हैं. कर्मन जो मैंने बताया ना, कर्मन एंड पुनर्जन्म, तो पुद्गल वो कर्मन को बोलते हैं, KRMAN, कर्मन के कारण. आज तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, फिलोसफी है. आई हैव ट्राई एट माई बेस्ट माई स्टूडेंट्स, बट इवन इफ you can say feel uncomfortable, so I can understand your situation, but today's topic is, and whenever I am dealing with religion and philosophy, so it may be slightly uncomfortable but interesting. So once again go through. If you will have some problem, I will solve tomorrow. So I am stopping here. My time is over today. Okay, my students. Okay, good night. I will see you tomorrow.